hello guys, welcome to my YouTube channel, and I am giving the introduction of this machine. So this is the serving instrument, we call it total station. So I am giving the brief introduction about how it works. Okay, तो ये हम लोग सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम लोग टोटल स्टेशन बोलते हैं. तो हामी चाहिँ यसलाई यो सर्भिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन, यसलाई हामी टोटल स्टेसन भन्दछौँ. र अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई केही थोरै भन्न गइरहेको छु. ओके, देयर इज 3 थिङ्स अन दिस मेसिन. ओके, फर्स्ट इज EDM, and second is it measures the angle like a triangle, and third it measures also the elevation. So first is that it measures the distance, like this is the center of the machine, like here. Okay, this is the center of the machine. So from here anywhere in another places, like from here to there, how many distance you can measure from this machine. And the second thing, you can measure the angle, okay, from this machine angle. So there is a one point and there is another point. So and this machine there is 3 points. So from there to there, how much difference is angle you can measure. Okay, and third is you can measure elevation, like level machine. If you know the level machine, okay, you know that difference in elevation, like level means if you measure the certain point here and you want to know there how much difference on these 2 points the level, so you can measure that also. Okay, तो ये मशीन 3 चीज़ मेज़र करता है. तो ये डिस्टेंस मेज़र करता है, जैसे कि आप लोग किसी पॉइंट का ऊपर रखा, या अभी कैसे मेज़र करता है डिस्टेंस, मतलब ये मशीन होता है, मशीन जिधर सेट हुआ है उधर से आप जिधर का मेज़र करना चाहता है उसको साइड करके आप मेज़र किया तो इधर और उधर का डिस्टेंस मेज़र कर लेता है. वो एक होगा मेज़रमेंट डिस्टेंस EDM का थ्रू. इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस मेज़रमेंट होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रिकली मेज़रमेंट करता है लेज़र फाल के, नहीं तो ये प्रिज्मर का हेल्प से. और दूसरा होगा एंगल. ये एंगल मेज़रमेंट करता है, जैसे कि अभी उधर एक रेड वाला देख रहे हैं आप लोग का, उधर से आप लोग वो वाला रेड का आप एंगल मेज़रमेंट कर सकता है ये जगह से, ये स्पॉट से. मतलब आप ये पॉइंट का खड़ा किया तो अभी उधर में जीरो किया, बाद में उधर जाके वो पॉइंट में कितना डिग्री आता है, मतलब इसका एंगल वो मेज़रमेंट कर सकता है. और तीसरा हो गया एलिवेशन. आप इसको एलिवेशन मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग नॉन पॉइंट के ऊपर ये मशीन खड़ा कर दिया, उसके बाद मीटर के हेल्प से उधर का एलिवेशन मतलब लेवल कितना है, और इधर तक मेज़र करके आप लोग ये लेवल इसका थ्रू से दूसरा जगह में डाल सकते हैं लेवल भी. ओके, तीन चीज़ हो गया. ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक द how much difference in this angle. Okay, there is one point and there is another point, like a triangle, like there. Okay, so how much angular measurement we can check from there, this side, and how much it comes. Okay, so we are going to check it. We already make it the bubble of this machine, like this side is coming 0 sometimes it's in another direction, because this is also the machine. So it's not the like this is second in the second, so it's perfect. Like it should be always in the 0 second, not higher than 20 second. Okay, this is a degree, but then there is a minute, and in last there is a second. Okay, so it should be in the second, so it's properly bubble, and he's checking the this plummet. We call it, this is plummet. Okay, this is a plummet, optical plummet. There is also in the laser light in the different total station, and so we can check we are checking the difference in the angle. Okay, so हम लोग अभी एंगल डिफरेंस चेक करने वाला है. सो अभी एंगल डिफरेंस कैसे चेक करने, ये टोटल स्टेशन का हिसाब से फ़र्क होता है, पर ये फंडामेंटली ये तीनों चीज़ होता है ये टोटल स्टेशन में. ओके, सो हम लोग ये एंगल कितना है हम लोग मेजर करते हैं अभी. तो
So I rotated the machine directly to that point, okay, and it's exactly the crosshair is matching with that point. So we are assuming this is the 0 0, okay. This horizontal angle is 0 0, so I make it 0 0. Oh, you can see, you can see I set it this one 0 0. Yeah, this is 0 0. So I will rotate that side clockwise, and we will check again how much the angle difference it comes, okay. So I already set that side towards that point, and the angle is coming 76 degree 54 minute 57 second. So like this it can measure the angle. तो हम लोग ये 2 पॉइंट का एंगुलर मेजरमेंट ले लिया. उसमें इसमें आया 76 डिग्री 54 सेकेंड, सॉरी 54 मिनट 57 सेकेंड. सो अभी हम लोग ये इधर एंगल लिखा तो कितना होता है. सो वी rod in the ground is 76 degree 54 second and 54 minute 56 second. So the angular difference from that point to that point is, from this point 76 degree 54 minute 56 second. So this is how it measures the angle. तो यसरी चाहिँ हामीले एङ्गल मेजरमेन्ट गर्छौँ है. त्यो पोइन्टमा साइड गरेर 0 0 गरौँ र यो पोइन्ट अर्को पोइन्टमा हामीले 0 0 गरौँ र यो पोइन्टको आधारमा कति आयो भन्दाखेरि 76 डिग्री 54 मिनट 56 सेकेन्ड चाहिँ यो एङ्गुलर डिफ्रेन्स आयो. ओके, तपाईँहरूले यो कोअर्डिनेटको आधारमा जे गर्दा पनि यो तपाईँहरूले फन्डामेन्टली बुझ्नुपर्ने कुरा. यसले एङ्गल मेजरमेन्ट गर्छ यसरी है. ओके, so for the level we are assuming this point is known, and this reduced level RL is 100 meter above from the sea level. Okay, we estimate this is the 100. So through this machine is that where this we'll take the meter and we will shift this level to the center of the machine. There is a cross here, you can see. We'll measure it from here to here, then we'll check the height. This is called instrument height. यसमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भन्छौँ हैन. अब यो नोन पोइन्ट आरएल मा तपाईहरुले पोइन्टमा राखिसकेपछि चाहिँ अथवा कुनै लेभल अथवा रिड्युस लेभल भन्छौँ हामीले चाहिँ है. त्यो रिड्युस लेभलमा राखिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले माथि मेसिनमा तपाईहरुले त्यो लेभललाई शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. So we assume this is the RL is 100. Make it straight the tape. So we assume this level is 100, and instrument height we shift it here. This instrument height is coming like exactly coming is 150 378 milli. Okay, we shift the level in the instrument like this. Okay, from there to there. तो हम लोग ये नॉन रिड्यूस लेवल में हम लोग मशीन को खड़ा करते हैं. तो इधर इसको हम लोग एजम किया ये 100 लेवल है, 100 लेवल, नहीं तो ये हम लोग 0 0 ही मान सकते हैं, एजम कर सकते थे. तो उधर से ऊपर तक मशीन हाइट हम लोग मेज़र करते हैं. इधर आ रहा है 153 सेंटी 1 मीटर 53 सेंटी 8 मिली 9 मिली आ रहा है, 8 मिली आ रहा है सही एग्जैक्टली. तो हम लोग ये नीचे वाला लेवल ऊपर शिफ्ट करते हैं, उसको सीधा करना सही, बीच में मत पकड़ना. तो ऐसे मशीन में लेवल हम लोग शिफ्ट करते हैं. ऐसे ये तरीका हो गया. हम लोग ये मशीन में लेवल शिफ्ट करते हैं और उसका जरिया हम लोग दूसरा जगह का हम लोग लेवल इजीली ले सकते हैं. उधर भी प्रिज्मा खड़ा करके उसका हाइट मेजरमेंट करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये हो गया. तो दूसरा हो गया उधर का हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर. वो जो रिफ्लेक्टर होता है वो प्रिज्मा होता है, उसका हाइट मेजर करके उधर का भी हम लोग लेवल इजीली पता कर सकते हैं. हामीले चाहिँ यो यसरी नोन पोइन्टमा अथवा यो राखिसकेपछि चाहिँ यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर मिटरले नापेर माथि इन्स्ट्रुमेन्टको बीच भागसम्म राखेर चाहिँ यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जान्छौँ. जानेपछि चाहिँ यो आरएल भ्यालु र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट डालिसकेपछि चाहिँ यो
मेसिन त्यस लेभलमा सेट हुन्छ है। त्यस लेभलमा सेट भएपछि चाहिँ अर्को ठाउँको लेभल चेक गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो प्रिज्मा हुन्छ, जुन प्रिज्माको हाइट पनि हामीले चेक गर्छौँ र त्यसको त्यहाँको आरएल हामी पत्ता गर्न सक्छौँ, अथवा लेजरको आधारले जसरी भए पनि हामीले यो लेभल हामीले पता गर्छौँ। थ्री थिङ्स। ओके, फर्स्ट आई टक अबाउट द इडियम। ओके, इडियम इट मेजर्स। ओके, आई विल सो द इडियम अल्सो। फर्स्ट इडियम, पहले इडियम डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, इडियमको थ्रु डिस्टेन्स मेजरमेन्ट है। सेकेन्ड थिङ द angular measurement, point to point angular measurement, and third thing is the elevation. We'll shift the elevation first in the machine, then we'll check other places elevation. So this is the mini prisma, that's why we are measuring with the steel tape this mini prisma rod. Okay, we already locked this mini prisma, and we want to know the reflector height. Okay, so we'll decide this is the center of the prisma, mini prisma. Okay, in the horizontally, this is the center of the mini prisma, and from there to there how much, we just measure this one. We have to know this one before taking any elevation level. Okay, so ये मिनी प्रिज्मा होगा, इसीलिए हम लोग ये मीटर से मेजर कर रहा है। सही है, बड़ा वाला बिग प्रिज्मा होता तो उसमें ऑटोमेटिकली मेजरिंग वाला वो स्केल होता है, वो ऑटोमेटिकली नॉन हो जाता है, मतलब उसको पता चल जाता है कितना मीटर ऊपर और नीचे। इसमें हम लोग स्टील टेप की मदद से इसका मेजर कर रहे हैं रॉड, क्योंकि ये मिनी प्रिज्मा ऊपर नीचे होता रहता है। अभी ये इसको लॉक डाला है तो हम लोग ये सेंटर हो गया मिनी प्रिज्मा का, और ये आखिरी हो गया। इसका डिस्टेंस कितना होता है हम लोग ये टोटलाइजेशन में पुट करते हैं, सही इनपुट करते हैं, तभी ये एक एक्यूरेट एलिवेशन देता है, लेवल देता है। मतलब वो मशीन कितना ये एलिवेशन है, इसका हाइट कितना है वो पूछता है उधर मशीन, इसलिए हम लोग ये मेजर करते हैं। सही, यो चाहिँ मिनी प्रिज्मा, त्यसैले हामी यो मिनी प्रिज्माको हाइट मेजर गरिदिन्छौँ। बिग प्रिज्मा भएको भए चाहिँ त्यसमा अटोमेटिकली स्केल हुन्छ, त्यसको मद्दतले हामीले कति हाइटमा छ यो मिनी प्रिज्माको सेन्टर भन्ने पत्ता गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले यहाँबाट यहाँ चाहिँ हामी 20 सेन्टिममा राखेका छौँ है। 20 सेन्टिममा राखेको छ। एलिभेसन नाप्नको लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट र यो रड हाइट अथवा भनौँ यो हाइट अफ रिफ्लेक्टर, यो हाल्नको लागि एकदम जरुरी हुन्छ है एलिवेशन चेक गर्दाखेरि चाहिँ। एलिवेशन के लिए हम लोग जाएंगे स्पेशली ये HDR बेसिक जो लिनक्स का सॉफ्टवेयर होता है उसमें कैसे जाते हैं। थोड़ा इधर ये थोड़ा ब्राइट आ रहा है, OBCS। तो हम लोग ये मेनू में जाते हैं, उसके बाद आई विल गो डायरेक्ट। ओके, सो वी गो टू द कोऑर्डिनेट एंड occupation orientation, sorry for the English, I am laughing. Okay, this is the UTM code, and okay, I will put the 100 and string and another 100 also the nothing. So this is the point number, point ID. So point, this is 100, anything you can put it. Okay, the height of instrument, we measure it already, this height of instrument. Okay, we are putting 1 meter 53 cm 8 milli. This is the for the elevation measuring, this is very important. Okay, तो हामीले चाहिँ यो के भन्दाखेरि स्ट्रिङ र नर्थिङ ऱ्यान्डमली हाल्यौँ र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1.53 हाल्यौँ र so we make it string 100 and northing also 100, and the elevations RL means G. Okay, this is also 100, we assume this one 100 already, and we are putting the height of instrument 1.538. Okay, we will backside with NEG, we will just side anywhere where so I am sighting randomly at anywhere, and we put the I put the randomly, just we are checking the labels, we are not working with the any coordinates, so for the label only. So I put the random nothing anything, and Z also I put nothing, I put 9 and 5 randomly. Okay, this will not align with perfectly with the coordinate system, but for the label also. Okay, so I put this one is a laser, so I put the laser and I just randomly measure it.
and there is a error in 1 point minus 1.23 because I put randomly the coordinates, that's why. Okay, I'm just doing okay for the checking the level only. Okay, jao udhar jao. So my main is already there, and we assume this one is the 100 RR, and already we transfer the this level on this machine, and we are just checking the level of that point with reference to this point. Okay, so this one is asking height of reflector, so we know the height of reflector is 20, so I put it height of reflector, sorry for my English, height of reflector 20, and I will slide that prism and I just do the measuring. Okay, so the elevation is coming the same because this is the same slab from there to there, same. Okay, we'll go to another place and we'll just check. So we are checking the elevation of that ply. I just slide the machine and just sorry, the height of reflector is 0. Sorry, this is in the laser. Okay, just I make it 20. Okay, so this is 977 milli is coming up from this point. Okay, this is the 100 RL, so this is coming 977 milli, so it's 977 milli above. र हामीले चाहिँ यो एलिभेसन कसरी चेक गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो पनि हामीले मजाले देखाइसक्यौँ हैन। यहाँ भन्दा चाहिँ यो एरिया भन्दा चाहिँ त्यो 977 मिली माथि ऊपर माथि छ है त। मैं बोल रहा हूँ ये इस जगह से वो 977 मिली ऊपर है। हम लोग ये मशीन के जरिए से एलिवेशन डिफरेंस हमें पता कर लिया। ओके, so we measure the angle, and second thing we measure the elevation RL also, and the third thing is the distance. So we already set the machine at certain point, certain point from here you want that column distance. Okay, from this point to you want the column, that column point. Okay, so we'll set that this machine towards that column. Okay, exactly which point you want, which corner you want. Okay, you will side towards that area, this machine. So I already sighted this machine towards that column and towards that corner, whichever point I want the difference from this area, this point. So I already sighted, and I'll do the measuring. I'll shift to the non-prism, and currently the sorry, this इधर बैठो थोड़ा, क्यों ये पूरा ये चल रहा है। So you can see slope distance is coming 3 meter and horizontal distance is coming 3 meter. Okay, this is the before measuring. Okay, just I will do the measuring with the non-prism. So from this point to that corner of the column is coming horizontal distance 17 meter 22 cm 5 milli, and the slope distance is coming, slope distance means because this machine is in the height and I direct it towards the base of the beam, so the slope distance is coming. If I increase this to my eye level, the slope distance will decrease. So the slope distance is coming same 22 before how much? Before it's coming 28. Okay, so I sighted towards the same level with the eye. So the slope level means this machine and the sighted location, how many slope. Okay, how much slope. This is the slope distance. Horizontal distance means the exact distance from this point to that point. Measure difference between the distance. Anyhow, this machine is up and
you are measuring the down, it always measures the horizontally like a dimension in the AutoCAD. So from this point to that point, difference is the horizontal distance. Okay, 17 meter 21.76 mil it's coming. So like this. र थर्डमा चाहिँ हामीले हरिजेन्टल डिस्टेन्स भन्यौँ है नि त, सरी डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्छ। र हामीले यो पोइन्ट र त्यो कोलमको कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट, जस्तै कि मानौँ कर्नरको डिस्टेन्स थाहा पाउनु छ भन्दाखेरि हामीले यो मेसिनलाई त्यो पोइन्टको कर्नरमा चाहिँ हामीले साइड गर्छौँ। ओके, पहिला साइड गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर फङ्सनहरूमा गएर यहाँनिर हामी मेजर भन्ने F1 छ, F1 कि मेजर गर्छौँ। र यहाँनिर दिएको छ स्लोप डिस्टेन्स, हरिजेन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स। र यो ओबिएस लेखेको छ, यो चाहिँ अब्जर्भेसन भनेर यो सर्टकटमा हो। हामीले नन प्रिजमा, जस्तै यो एरो छ, यो चाहिँ नन प्रिजमा देखाएको, यसमा यो मेसिनमा चाहिँ यस्तो फङ्सनमा चाहिँ यो एरोको चाहिँ नन प्रिजमा हो भनेर यो देखाएको छ, यो नन प्रिजमा हो। ओके, सो यहाँनिर लेखेको छ हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ 17 मिटर 22 सेन्टी छ। र सरी स्लोप डिस्टेन्स है, र स्लोप डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भने त्योभन्दा कम छ, 1 सेन्टी कम छ है, 1 सेन्टी कम छ। मतलब यो र मैले यो आई लेभलमा लगभग सेम लेभलमा नै मैले मतलब एकदम सिधा चाहिँ यसलाई साइड गरेको छु। यो किनकि यो रोटेट गर्छ है। मैले जस्तै अब यो मैले चाहिँ जस्तै अब यो बेसमा साइड गरेँ भने चाहिँ यो अहिले यति छ, 22 र 21 छ है। अहिले स्लोप डिस्टेन्स चाहिँ 28 आयो, तर हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ लगभग अघि 21 थियो या 22 थियो, मैले भुलेँ। लगभग 1 सेन्टीको फरक आयो, किनकि त्यो कोलममा जस्तै कि त्यो खुबड खाबड भएर त्यो 1 सेन्टीको फरक आयो। जस्तै हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ एक्ज्याक्ट यहाँ र त्यहाँको हरिजेन्टल डिस्टेन्स, मतलब कुनै यो ठाउँमा मैले कुनै अब एकदम सिधा भर्टिकल कुनै चिज राखेर त्यो कोलमलाई मेजर गरेँ भने माथि र तल एकदम प्यारालल हुने गरी त्यो राख्यो भने चाहिँ यो डिफ्रेन्स चाहिँ हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ सेम आउँछ। यसरी यो स्लोप डिस्टेन्स र हरिजेन्टल डिस्टेन्स हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र यो हरिजेन्टल चाहिँ हामी डिस्टेन्स चाहिँ एज्युम गर्छौँ। र यो तीनवटा भन्दा पनि यो दुईटामा यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता र एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने क्षमता भएपछि चाहिँ यसले एकदम मजाले कोअर्डिनेटमा काम गर्ने गर्दछ। So I talked about 3 things: elevation, distance measurement, and angle measurement. And only the 2, there is a angle measurement and distance measurement. It can do the both. So with the help of these 2 things only, it can produce the coordinate like X and Y, easting and northing. That's how it works in the coordinate system. It can measure the angle accurately and it can measure the distance accurately. That's how it measures the coordinate, and it measures the latitude and longitude, and if you put the machine in the certain known latitude and longitude, you can produce another latitude and longitude. Okay, if you set this machine in certain latitude and longitude, you can know another latitude and longitude, and already there is known latitude and longitude, and you can provide exact that point where it is coming. Okay, certain area where it is coming, you can provide that location exactly. That's how it works. लॉन्जिट्यूड के ऊपर हम लोग पॉइंट के ऊपर ये मशीन को रख दिया, तो दूसरा हम लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम लोग खुद पता कर सकते हैं. ओके, तो अदर थिंग्स ऑल्सो यूटीएम सेम इन द यूटीएम ऑल्सो. आप लोग कुछ नॉन यूटीएम के ऊपर रख दिया मशीन और इसको दूसरा पॉइंट के जरिए से इसको सेट कर लिया. दूसरा दो पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए. तो सेट करने के बाद आप लोग दूसरा नॉन पॉइंट आप लोग पहले से लैटिट्यूड या लैटिट्यूड मालूम है, वो जगह का पॉइंट डाल के हम लोग वो जगह पता कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सर्विंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो
For now, only this much. Maybe it's become the too much long video, no problem. तो मैं बोला generally 3 things, okay? Angle measurement and distance measurement. Combine both that, there is a coordinate system. Okay? Angle measurement, distance measurement. It can measure accurately the angular measurement and also the angular distance. Then all the system it comes in the coordinate. It can produce all the coordinate, everything. So this is how it works. This is the basic thing. So it knows the another known point. All the drawings are in the measurement, like with the dimension, like 80 centi, 50 centi, and another thing also. And you know the if you angular measurement also, if you set the machine in the certain point, from that point angle how much is coming. That's how it produces the coordinate.